Morning everyone. So continuing with depreciation, this week's last lecture of depreciation. This week's tomorrow we'll be having the test of bank reconciliation statement. Prepare all the illustrations thoroughly, okay, and nobody will miss the test. And practice and do all the backlog of depreciation by Sunday. Now yesterday like one chat had a concern, मैम DPS में एग्जाम्स हैं, कभी हम ये न्यू चैप्टर्स ना करें. बेटा एग्जाम्स तो चलते जाने, कभी किस स्कूल के लाइक अकाउंट्स में अगर हम सोचें पिछला सिलेबस की प्रैक्टिस इट वुड हार्डली टेक 1 आवर, और नया सिलेबस अलॉन्ग विद माई लेक्चर कंप्लीशन अगर 1.5 घंटे अगर 40 मिनट्स का लेक्चर है तो 40 मिनट साथ में हमें सम सॉल्व करने के लिए चाहिए, होमवर्क करने के लिए चाहिए. सो नो बिग डील इन दिस, ठीक है ना. ये साथ साथ करो क्योंकि हमारा मेन टास्क होगा सितंबर एग्ज़ाम जो फुल फ्लेज मार्क्स के होने हैं, 80 मार्क्स के. तो उसमें इतना सिलेबस आना ही आना है. वंस वी आर थ्रू विद ऑल दिस थिंग्स वी कैन गेट टाइम फॉर रिवीजन. तो 31 जुलाई तक आई एम टारगेटिंग डेप्रिसिएशन ख़त्म करना है, और उसके बाद हम 1 अगस्त से, मतलब अगस्त में भी मैंने 2 चैप्टर्स कवर करने हैं. देन विल स्टार्ट विद द रिवीजन्स, ठीक है, क्योंकि इतना सिलेबस टारगेटेड होता है आना है. मे भी इस बार क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो शायद सिलेबस कम आ जाए, तो हम एक चैप्टर और करके इसके बाद फिर शुरू से सारा रिवाइज करें. इज इट क्लियर टू ऑल? सो लेट अस कंटिन्यू विद डेप्रिसिएशन. टुडे द डेट इज 17th July 20. Depreciation continued. Depreciation continued. चलो. So yesterday we did how to prepare machinery account, ठीक है. आई होप द लेक्चर वॉज क्लियर टू यू ऑल. उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और इस बार करेंगे हमने कोई ऐसे ड्यूरिंग द ईयर खरीदी. सो वो सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक विल सॉल्व वन क्वेश्चन आई डिक्टेड. राहुल परचेज्ड machinery costing rupees 2 lakh on 1st October 12 and paid CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Charge depreciation at the rate of 10% per annum for 3 years. Accounts close on 31st March every year. Accounts close on 31st March every year. करें स्टार्ट. चलो जी. अकाउंट्स 31st मार्च को बंद हो रहे हैं. 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, और ये मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट भी हर बार लगेगी, ठीक है. नाउ व्हाट वाज द की पॉइंट इन दिस क्वेश्चन? एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. सेकेंड की पॉइंट जीएसटी भी है. थर्ड की पॉइंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम. फोर्थ की पॉइंट कितने सालों के लिए अकाउंट बनाने, 3 years. फिफ्थ की पॉइंट 31st मार्च को अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व बिगिन. कहते हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. स्टार्ट करें. मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेट,
particulars, folio, amount rupees, date, particulars, folio, amount rupees. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. 1 अक्टूबर 12 को हमने एसेट खरीदी. टू बैंक. Amount is more than 20,000. I told you if amount is more than 20,000, we will be using the word to bank. 2 lakh. ठीक है जी, ठीक है. पूरा साल एसेट यूज हुई और साल के एंड में क्या लग गई? डेप्रिसिएशन. अब प्रॉब्लम है ये एसेट इस साल कितने मंथ्स के लिए यूज हुई? फिंगर काउंटिंग. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 मंथ्स के लिए यूज हुई. नेचुरली फर्स्ट ईयर्स डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ्स. कैसे निकालेंगे? 2 लाख इंटू 10% इंटू 6 बाई 12. 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12. 10,000. Rest will be by balance carried down. 2 lakh minus 10,000, 1,90,000. What is the date? 31st March 13. What is the date? 31st March 13. ठीक है. चलो, नेक्स्ट डेट वुड बी 1 अप्रैल 13. अब गलती मत करना कि 31 मार्च 13 के बाद 1 अप्रैल 14 आएगा. 31 मार्च के बाद अगली डेट क्या आएगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा नेक्स्ट डे को. सो दैट वुड बी 1 अप्रैल 13. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज हाउ मच? 1,90,000. ठीक है. अब लगाएं डेप्रिसिएशन. Depreciation will be charged on 31st March 14 by depreciation. Now, in this year, depreciation will be charged for full year. 2 lakh paid 10%, 20,000. And 31st March 14 को हम निकाल देंगे by balance carried down 1,70,000. ठीक है. Is it clear? And my second year is complete. चलो, 1 April 14 to balance brought down 1,70,000. 31st March 15 को again we will charge this was depreciation 2, second year. Depreciation 3. Again original cost straight line method 10% on 2 lakh, 20,000. Rest would be by balance carried down 1,50,000. कैसे आया? 170 minus 20, 1,50,000. What is the date? 31st March 15. What is the date? 31st March 15. कितनी देर के लिए बनानी है हमें? 3 years. So this was depreciation 3. Now you have to check 3 years are complete. This was year 1. This was year 2. And this was year 3. ठीक है. अब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कैरी डाउन किया 1 अप्रैल 15 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो. जितना कैरी डाउन उतना ब्रॉट डाउन. सो व्हाट डिड वी कंक्लूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. मैम ये तो 2.5 years की लगी क्योंकि हमने वो खरीदी 1 अक्टूबर को थी. बट वी एज्यूम उस साल जितनी देर एसेट यूज हुई है दैट इज कंसिडर्ड एज ईयर 1 ओनली. फर्स्ट ईयर में 6 महीनों की
सेकेंड ईयर में पूरे साल की, थर्ड ईयर में फिर से पूरे साल की, ठीक है। डेट ऑफ परचेज से नहीं 3 ईयर्स निकालने, फाइनेंशियल ईयर्स लेने थी। सो की पॉइंट वन, in the year of purchase, depreciation is charged according to number of months, है ना, and in subsequent years depreciation is charged for full year, second main point, GST ignored in asset account, है ना, बताया था ना, GST will not be taken, ठीक है, GST ignored in asset account, ठीक है। So these were the two main points. चलो जी, अभी तक हम कर रहे थे एक एसेट। नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट केस, नाउ नेम इट एज दैट वाज सिंगल एसेट परचेज्ड। नाउ केस 2, 2 एसेट्स परचेज्ड। अब 2 एसेट्स, 2 भी खरीद सकते हैं, 3 भी खरीद सकते हैं। 2 एसेट्स परचेज्ड। सो लेट्स राइट डाउन अ क्वेश्चन। मनीषा परचेज्ड फर्नीचर costing rupees 5 lakh on 1st January 17. On 1st April 18, she purchased another furniture for rupees 2 lakh and spent 20,000 on installation. Charge depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method basis. दो बार सुनना लेक्चर। Assume accounts close on 31st December. इस क्वेश्चन में अकाउंट्स क्लोजिंग कब की दी हुई है? 31st December, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द सम। सबसे पहले आप लिखोगे कितने ईयर्स। अच्छा, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। नॉर्मली 3 या 4 ईयर्स का आता होता है, ठीक है। अब आपने 3 ईयर्स कैसे स्टार्ट करने हैं? 1/1/17 से 31st December 17। फर्स्ट ईयर 17 होएगा एंड 31st December। सेकेंड ईयर will be 1/1/18 to 31st December 18, because they have said accounts close on 31st December. 1/1/19 to 31st December 19। इधर लगेगी D1, इधर लगेगी D2, इधर लगेगी D3। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर ईयर्स कौन से, क्योंकि ईयर्स की गलत लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैन कॉज प्रॉब्लम, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। डेट, particulars,
amount rupees, again date, particulars, amount rupees. करें स्टार्ट। चलो जी, 1/1/17 को पहला एसेट खरीदा, 1/1/17 to bank for how much? 5 lakh. 31st December 17, for the full year the asset was used, we will charge depreciation for first year. 5 lakh paid 10%, 50,000. 31st December 17 को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, coming over to the second year, 31st 1/1/18, the balance which is carried down उसको अगले साल में ब्रॉट डाउन करते हैं, 4,50,000. Now what happened in this year? On 1st April we purchased another asset to bank. 2 लाख का एसेट खरीदा और 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन, 2,20,000. ठीक है, 2,20,000. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट, अब 31st December 18 को what we will do, now we have 2 assets in existence. ठीक है ना, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो तो बिगिनिंग वाला एसेट था ऑन दैट डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर फुल ईयर, and on new asset purchase 2,20,000 depreciation will be charged for how many months? 9 months. $165,000. So 50,000 plus 165,000, 665,000, and rest will be by balance carried down. 4,50,000 plus 2,20,000, 6,70,000 minus 665,000, 6035,000. What did I do? जो तो बिगिनिंग वाली एसेट है जो फर्स्ट ईयर में खरीदी वो पूरा साल की डेप्रिसिएशन, जो न्यू एसेट खरीदी दैट वाज परचेज्ड ऑन 1st April, so depreciation will be charged for 9 months. Total depreciation 665,000. What is the date of balance carried down? 31st December 18. ठीक है जी, नेक्स्ट, 1st April 19 to balance brought down, 6,035,000. ठीक है, 6,035,000. Now nothing was purchased in this year. 31st December 19 को we will charge depreciation 3. 5 लाख पे 10% पूरे साल का, 2,20,000 पे भी 10% फॉर फुल ईयर, 72,000 by balance carried down.
531500. बैलेंस तो निकालना आता है ना, जैसे लेजर अकाउंट दिस minus this would be the balance. This minus this would be the balance. This is the final answer. So balance of, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देंगे. Balance of furniture account on 31st December 19 is equal to rupees 531500 is equal to rupees 531500. ठीक है? Is it clear to all? Next. So this was a very important sum. देखो 3 years कैसे complete हुए, 3 years की depreciation लगानी थी. This is year 1, this is year 2 and this is year 3. Fine. चलो. Now case 3 is when an asset is, अभी सिंगल एसेट का करते हैं, परचेज्ड एंड सोल्ड, और बेच भी दिया. की पॉइंट्स फॉर सेल: whenever an asset is sold, then calculate book value on the date of sale. वो कैसे आएगी? पिछले सारे सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके आज जो वैल्यू है, दैट इज बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. कंपेयर book value on the date of sale with the sale value. If book value is greater than sale value, if book value is greater than sale value, हमें क्या हो गया? Loss. If book value is less than sale value, हमें क्या हो गया? Profit. देखिए हमारी एंट्री क्या होती है? इवन राइट ऑन द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट. एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट. Cash is coming in, cash account debited. If there is loss is always debited. ठीक है ना? अगर उस पर डेप्रिसिएशन भी लगी है, सर डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. ठीक है? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश इज कमिंग इन ऑन सेल, लॉस ऑन सेल. इफ देयर इज लॉस, डेप्रिसिएशन डेबिटेड. इफ डेप्रिसिएशन is charged in current year, है ना? And credit what goes out to asset account. पहले क्वेश्चन प्रॉफिट या लॉस निकालना देखते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. An asset is purchased for 80,000 on 1st April 15. It is used for 3 years
at the end of which it is sold for 56,000. Calculate profit or loss on sale of asset. Correct. So imagination is account. तो हो क्या रहा है ट्रांजेक्शन में और ध्यान से देखना. 1st April 15 को we purchased an asset for 80,000. ठीक है. We purchased an asset for 80,000. Okay. Minus depreciation for year 1. 80,000 पे 10% depreciation. अच्छा लिख लो, मैंने लिखा है ना. Depreciation rate 10% और method वो straight line में. Depreciation 1 means depreciation for first year. Book value on 1st April 16 ऐसे लिख सकते हैं. Can I write like this? एक साल पूरा ऐसे चूज हुआ, उसका वैल्यू कितनी रहेगी 72,000 माइनस डेप्रीसिएशन 2 फॉर सेकेंड ईयर 8,000. बुक वैल्यू ऑन 1st April 17 64,000. ठीक है. Depreciation for year 2 minus depreciation for year 3. 3 years की लगानी ना. Book value on 1st April 18 56,000. थोड़ी सी ऊपर वैल्यू चेंज कर ली. इट इज सोल्ड फॉर सपोजिंगली 58,000 करें, नहीं तो आपको फिर आंसर आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा. ठीक है. दिस इज बुक वैल्यू ऑन 1st April 18. 3 years यूज़ करके अब एसेट को सेल किया. सेल वैल्यू कितनी है कहते हैं 58,000. एन एसेट ऑफ 56,000 इज बीइंग सोल्ड फॉर 58,000. हमें क्या हो गया, ज़्यादा पे बिक रही है, हमें क्या हो गया प्रॉफिट ऑन सेल. हाउ मच 2,000. इफ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू what will we incur? Profit. If sale value is less than book value, what will we incur? Loss. ठीक है जी. Is it clear? Any doubt? This is how we have to do. Now let's solve the last question from the book. Let's solve the last question from the book. आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. निकालो जी पेज. ये वाले 3 क्वेश्चन यहाँ से, इसके साथ मैं अब 3 क्वेश्चन और लिखवाऊंगी एज होमवर्क. पहले क्वेश्चन नंबर 5 करूँ. बुक पेज 14.48. An asset was purchased for 10,500. Scrap value was 500. Estimated years of useful working life 10 years. Amount of depreciation is equal to 10500. फॉर्मूला कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10. 10,000 डिवाइडेड बाय 10. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी 1,000. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी 1,000.
ठीक है, चलो आप कहते हैं द एसेट वॉज सोल्ड फॉर 600 ऑन 31 मार्च 19। अच्छा, एसेट खरीदा कब? 1 अप्रैल 10500 और बेचा कब? 19। कहते हैं सबसे पहले तो निकालो वॉट एवर दे हैव आस्क्ड, वी हैव टू आंसर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 मार्च 13 देखते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन 1000, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 13 9500। ओरिजिनल कॉस्ट ही फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना है, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन जाएगी 1000। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 14 8500। डेप्रिसिएशन 2 सॉरी डेप्रिसिएशन 3 माइनस 1000। मैम कब तक चलना है? 19 तक। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 15 7500 माइनस डेप्रिसिएशन 4 1000। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 16 6500 माइनस डेप्रिसिएशन 5 1000। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 17 5500। मैम इकट्ठा नहीं कर सकते 1000 इंटू 6 7। हाँ, अगर आप बहुत केयरफुल हो विद रिगार्ड टू द नंबर काउंटिंग आप कर भी सकते हैं 1000। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 18 4500 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 7। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19 3500। सेल वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द सेल वैल्यू? सेल वैल्यू इज 600। 3500 माइनस 600 हमें क्या हो गया? लॉस ऑफ 2900। नाउ फर्स्ट पॉइंट व्हाट दे हैव आस्क्ड इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च, डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 13 कितनी है? 31 मार्च 13 की डेप्रिसिएशन 1000। सेकेंड क्वेश्चन, बुक वैल्यू ऑन, तो आप 1 to 10 इकट्ठा करोगे फिर आपको ये वैल्यूज नहीं पता चलेंगे। 31 मार्च 17। अच्छा, कहना है सिर्फ 31 मार्च 17 एंड 1 अप्रैल 17 इज सेम। यस, तो कितनी थी बुक वैल्यू? 5500। 31 मार्च 17 एंड 1 अप्रैल 17 इज द सेम। ठीक है, एंड लॉस ऑन सेल हमें क्या हुआ? 35 वाली चीज़ 600 रुपये की, लॉस ऑन सेल 2900। These are the answers of the question. In this question we don't have to prepare the account, we just have to write the answers. Is it clear? समझ में आई बात? Yes or no? Yes or no? चलो नेक्स्ट, questions for homework. Saksham purchased building for ₹6 lakh on 1 April 16. On 1 October 17, he purchased another building for 3 lakh. Prepare building account for 3 years. ये हमेशा फर्स्ट मशीनरी से शुरू करना है आपने, फर्स्ट एसेट से। ये नहीं कि 1 अक्टूबर वाले का भी 3 years, फिर तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा सब। फर्स्ट एसेट से हमेशा कैलकुलेट करते हैं फॉर 3 years। डेप्रिसिएशन रेट इस बार मैंने चेंज कर दिया 20%।
and accounts close on 31st March. Okay, question number 1. Question number 2. An asset is purchased for 55,000 on 1st April 15. The scrap value is 5,000 and number of years of useful life is 10 years. After which it is sold for 15,000. Calculate the following. पहले बुक वाले सम्स नोट्स बनाओगे, फिर जो मैंने बुक में से या अपने नोट्स वाले सम्स और कराए हैं वो करोगे, फिर ये होमवर्क वाले सम्स करोगे. सो कंप्लीट दिस लेक्चर्स बाय संडे. Calculate the following. Number 1, depreciation expense for 31st March 16. Number 2, book value on 31st March 17. Third, profit or loss on sale of asset. Profit or loss on sale of asset. So this was enough for the day. Complete your lectures. Prepare the test. Tomorrow evening at 6 you will be issued the test paper and then solve the test. Okay, ji. Thank you. Have a nice day.